Greetings students, this is Archana Dubey and today we are going to learn about chapter number 2, relations and functions of functions. So let us begin with definition of a function. A function relates each element of a set with exactly one element of another set. It is a special relationship where each input has a single output. It is often written as fx, where x is the input value. Let us take one example where fx equals to x. We call it as f of x equals x divided by 2. It is a function because each input x has a single output x by 2. By taking some counter examples, if we take x equals to 2, then we put 2 in place of x in the given function. So f of 2 would be 2 by 2, which is equals to 1. Similarly, f of 16 would be 16 by 2, which is equals to 8, and f of minus 10 equals to minus 10 by 2, which is equals to minus 5. So, let us learn what is domain and what is codomain. What can go into a function is called the domain. It means here set P is said to be domain. And what may possibly come out of a function is called the codomain. Here set Q is said to be codomain. Now difference between range and codomain. The set of elements that get pointed to in B, the actual values produced by the function are the range, also called the image. So students, here set P is said to be domain and set Q is said to be codomain. And what all elements get pointed? For example, Ali, Bhanu, Binoy, Chandra. These elements comes under range, but Ali, Bhanu, Binoy, Chandra and Divya comes under the set of codomain. So this is the difference between range and codomain. Or we can say all those elements which relates with the set of elements of P, those elements comes under range. Now, two important things are there. First, each element in the domain points to only one element in the range. That is called function. So, for example, Amy relates with Mrs. Smith, Anna relates with Mrs. Smith. Here, each element of domain points to only one element in the range. No doubt, Amy and Anna are two different elements, but they points to single element Mrs. Smith. Similarly, Jocelyn and Jenny, etc. So, domain elements do not repeat. Therefore, it is a function. Now next, it is not a function since elements in domain point to multiple elements in the range. For example, Mr. Gino points to Amy, Anna and Jenny. Students, यहाँ आपको ये देखना है फर्स्ट सेट का एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेट करे दूसरे सेट में. मैं ये कहना चाहती हूँ डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए. फर्स्ट फिगर में एमी और एना अलग अलग एलिमेंट हैं, लेकिन वो रिलेट सिर्फ मिसेस स्मिथ से कर रहे हैं, आई मीन सिंगल एलिमेंट से. बट इन नेक्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर, मिस्टर जीनो इज देयर हु रिलेट्स विथ एमी, एना एंड जेनी. So it is not a function. When a relationship does not follow those two rules, then it is not a function. It is still a relationship, just not a function. वो relation तो कहलाएगा, but function नहीं कहलाएगा. Function की दो conditions हैं. Each element in the domain points to only one element in the range. And another condition is it cannot be a function if elements in domain point to multiple elements in the range. Some more examples we are taking. For example, set A which is called domain and set B which is called codomain. Students, set B में जितने भी elements होंगे, set B जो है वो codomain ही कहलाएगी. लेकिन जितने elements उसमें relate करते होंगे वो सिर्फ हमारे range में आएंगे. For example, in set A, all x are assigned.
I am saying that all x are assigned. It means 1, 2, 3, 4, 5. No doubt they are relating with 4 only. But each element of set A are relating with single element of set B. So it is a function. Next example. Look at next figure. The relationship is not a function. Let us see why. This is a relationship, but it is not a function because of these reasons. First, value 3 in x has no relationship in y. यहाँ 3 जो है वो y सेट से किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है. Next, value 4 in x has no relation in y again. And value 5 is related to more than one value in y. So students, आपको समझ आया? कोडोमेन में एलिमेंट्स एक्स्ट्रा बच जाएंगे जिनसे कोई रिलेशन नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन डोमेन के हर एक एलिमेंट का रिलेशन कोडोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के किसी एक एलिमेंट के साथ होना चाहिए. A function is a way of matching the members of a set A to a set B. Let us see some function. Why? Because one element of set A relates with two elements of set B. Yeah. So it is called injective function. What do you mean by injective? The injective means we won't have two or more A's pointing to the same B. Injective is also called one-to-one. One-to-one A set के सभी एलिमेंट exactly one element of set B से relate करेंगे, तो इसलिए उन्हें one-to-one function कहा जाता है. Next है surjective. Here every B has some A. Surjective means that B has at least one matching A, maybe more than one, is called many one. There won't be a B left out. Last one is bijective. Bijective means both injective and surjective together. So, representation of function in roster form. For example, you have to make one set in which ordered pairs would be there. For example, 0, 5, 1, 2, 1, 4. Here the x coordinate represents the element of domain and y coordinate represents the element of codomain. So 0, 5, 1, 2, 1, 4. Here in second and third ordered pair, element 1 relates with 2 and 4 both. So it is not a function. Now in second example, 3, a, 5, x, 3, d. Again element 3 relates with a and d both. So it is not a function. Similarly, a, 3, z, 33, a, 1. Again, a relates with 3 and 1 both. So, it is not a function. And last one is x, 6, c, 3, a, 8. No repetition is there. So, this is a function. Now, let us talk about image of a function. The image of a function is the set of all output values it may produce. You can see the figure here in domain X. The image of X lies in codomain Y. The inverse image or pre-image of a given subset B of the codomain of F is the set of all elements of the domain that map to the members of B. Students, X element जो domain में है, तो उसकी image आपको codomain Y set में मिलेगी, जिसको हम fx बोलेंगे, या फिर आप y बोल सकते हैं. तो x एलिमेंट हुआ डोमेन में और उसकी इमेज मिलती है कोडोमेन में. अब हम बात करेंगे प्री इमेज की. प्री इमेज इसका इनवर्स है. फॉर एग्जांपल, आपको fx मिला है कोडोमेन में, तो उसकी प्री इमेज आपको डोमेन में मिलेगी. आप ये बात समझ लो, हमेशा इमेज जो है वो कोडोमेन में होती है और प्री इमेज जो है वो डोमेन में होती है. यू कैन सी दिस फिगर. सेट A and B is there and mapping is there. So domain of F is set A. The codomain of F is set B. The image of B is Y. Therefore, F of B is equals to Y. You can see here F is relating with B as Y. The pre-image of Y is B. मैंने बोला pre-image हमेशा आपको domain में मिलेगी और image आपको हमेशा codomain में मिलेगी. The range that is image of A is YZ. रेंज वो एलिमेंट्स होते हैं जिनसे डोमेन का कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, वो एलिमेंट्स रेंज के अंडर आते हैं. एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जो भी बच जाते हैं और यू कैन से पूरा सेट जो होता है वो कोडोमेन होता है, बट रेंज में वही एलिमेंट्स आते हैं जिनके साथ डोमेन का कुछ ना कुछ रिलेशन होता है. नाउ लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल ऑफ योर एक्सरसाइज 2.2.
Let A is equals to set 1, 2, 3 up to 14. Define a relation R from A to A by R equals to x, y. One condition is there. 3x minus y equals to 0, where x, y belongs to A. Write down its domain, codomain and range. Students, यहाँ आपको रिलेशन दिया गया है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई लेने हैं, जिसमें एक्स और वाई दोनों ए में से ही होने चाहिए क्योंकि रिलेशन डिफाइन किया गया है ए टू ए, बट एक कंडीशन अप्लाई होगी जो कि है 3x माइनस वाई शुड बी इक्वल्स टू 0. आपको डोमेन लिखना है, कोडोमेन लिखना है, रेंज लिखना है. सो स्टार्ट करते हैं. द रिलेशन R from A to A is given as R equals to xy where 3x minus y equals to 0. So we can write 3x minus y equals to 0 as 3x equals to y. हम एक एक करके एलिमेंट्स लेंगे रिलेशन के लिए. आपको ये बोला गया x और y दोनों a में से ही लेने हैं आपको और वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करने चाहिए. सो फर्स्टली आई एम टेकिंग 1 फ्रॉम a. अब उसको हम इस कंडीशन में डालेंगे. अगर हम x को 1 लेते हैं तो हमारा y क्या मिलता है? 3 into x that is 3 into 1. We get y is equals to 3. तो हमें मिला 1, 3. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर आई मीन x कोऑर्डिनेट जो है वो डोमेन से होता है और जो दूसरा y कोऑर्डिनेट जो है वो कोडोमेन में होता है. नाउ आई एम टेकिंग x इक्वल्स टू 2 फ्रॉम सेट A. उसको हमने 3x इक्वल्स टू y पे रखा तो हमें मिला 2, 6. देन आई एम टेकिंग x as 3. We get 3 into 3 which is 9. So y equals to 9. So I will write 3, 9. Next element I am taking 4. So 3 into 4 which is equals to 12. So value of y would be 12. अब मैं यहीं तक लूंगी. क्यों? क्योंकि अगर हमने x की वैल्यू 5 ली तो y की वैल्यू हो जाएगी 15 और हमारा आंसर जो है वो भी हमारा a में ही मिलना चाहिए. हमारे पास a के लिए अवेलेबिलिटी है 1, 2, 3 अप टू 14 तक. तो अगर y की वैल्यू 15 आएगी तो वो वैलिड नहीं होगा क्योंकि रिलेशन हम a टू a ही डिफाइन कर रहे हैं. नाउ द डोमेन ऑफ R इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन. मैंने आपको बताया फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर के होंगे वो डोमेन के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. तो हमारा डोमेन ऑफ R हुआ 1, 2, 3, 4. द होल सेट A इज द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन R. कोडोमेन जो होता है वो सेकंड सेट होता है जिससे रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं. Hence the codomain of R is equals to the whole set A and the range of R is the set of all second elements of the ordered pairs in the relation. जिनसे रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, जो एलिमेंट्स रिलेट होते हैं डोमेन से, वो एलिमेंट्स रेंज में आते हैं. तो हमारे रेंज में आएंगे 3, 6, 9, 12. इन शॉर्ट आपने R को रोस्टर फॉर्म में लिखा ऑर्डर्ड पेयर्स में. तो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का x कोऑर्डिनेट जो है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो रेंज को रिप्रेजेंट करेगा और कोडोमेन जो है वो पूरा सेकंड सेट होगा. सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन अ रिलेशन R ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय R इक्वल्स टू x, y where y should be x plus 5. X is a natural number less than 4 where x, y belongs to set of natural number. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है कि y शुड बी x प्लस 5 और x की वैल्यू जो है वो 4 से लेस होनी चाहिए और x नेचुरल नंबर होना चाहिए. डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म. राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज. द रिलेशन R इज गिवन बाय R इक्वल्स टू xy वेयर y इक्वल्स टू x प्लस 5. x is a natural number and it should be less than 4. So natural numbers less than 4 are 1, 2, 3 only. Let us write down R in roster form. अगर हम 1 को रखेंगे x की जगह पे हमें y की वैल्यू मिलेगी 1 plus 5 that is 6. So we will write ordered pair as 1, 6. अगर हम 2 को रखेंगे x की जगह पे we will get y equals to 7. So next ordered pair is 2, 7. If I put x equals to 3 I will get y as 8. So ordered pair would be 3, 8. Now, the domain of R is the set of all first elements of the ordered pairs in the relation. You know this very well now. So, domain of R is equals to set 1, 2, 3 and the range of R is the set of all second elements of the ordered pairs in the relation. Hence, range of R equals to 6, 7, 8. Now, next example. A is equals to set 1, 2, 3, 5 and B is equals to set 4, 6, 9. Define a relation R from A to B by. Relation is defined as R equals to xy. The difference between
x and y should be odd, where x belongs to set A and y belongs to set B. Write R in its roster form. So let us start with set A and B. Set A is 1, 2, 3, 5 and B is 4, 6, 9. The relation from A to B is given as xy. The difference between x and y is odd, where x belongs to A, y belongs to B. So if I am taking x equals to 1, सी स्टूडेंट्स, हमारे पास लिमिटेशन ये है कि हमें x की सिर्फ 4 वैल्यूज लेनी है, एक एक करके, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5. तो पहले आई एम टेकिंग 1. इफ आई एम टेकिंग 1, देन माय y वुड बी 4. हाउ? बिकॉज डिफरेंस ऑफ x एंड y ऑड होना चाहिए. आप ये देखो, y आपको सिलेक्ट करना है सेट B में से. A में से मैंने लिया 1 और B में से लिया 3. इन दोनों का डिफरेंस 1 - 4 बोलो या 4 - 1. हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं देखनी है, ऑड नंबर देखना है. तो ऑड मिल रहा है तो मैं रिलेट करूंगी 1 को 4 से. अब मैं 1 को ही लूंगी A में से और B के बाकी दो एलिमेंट्स के साथ कोशिश करूंगी रिलेट करने की. अगर हम 1 और 6 लेंगे तो क्या 1 - 6 और 6 - 1 करने से हमें ऑड मिल रहा है? यस, वी आर गेटिंग ऑड नंबर. तो मैंने 1 को 6 से भी रिलेट किया. अब अगर हम 1 को 9 से रिलेट करेंगे तो 1 - 9 और 9 - 1 हमको पॉजिटिव और नेगेटिव 8 मिलेगा, जो कि ऑड नंबर नहीं है. तो 1 का 9 के साथ रिलेशन नहीं हो सकता. अब हम बात करते हैं 2 की. अगर हम 2 और 4 को रिलेट करते हैं तो उनके डिफरेंस से हमको इवन मिल रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल. इफ 2 और 6 को रिलेट करते हैं, अगेन इवन नंबर मिल रहा है. मैं 2 और 9 का रिलेशन देखती हूँ. 2, 9 इफ आई एम टेकिंग, आई एम गेटिंग 7 और -7. तो 2, 9 एक ऑर्डर्ड पेयर हुआ. अब हम A से 3 को लेते हैं. 3, 4 हो सकता है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ऑड आ रहा है. 3, 6 भी हो सकता है, अगेन डिफरेंस इज ऑड. एंड 3, 9 नहीं हो सकता है क्योंकि आंसर 6 आ रहा है, जो कि ऑड नहीं है. नाउ आई एम टेकिंग 5. आई कैन टेक 5, 4. यू नो द रीजन व्हाई. यू कैन टेक 5, 6. अगेन वी आर गेटिंग ऑड. बट वी कैन नॉट टेक 5, 9 because its difference is 4, which is an even number. Now, question number 4. The figure shows a relationship between sets P and Q. Write this relation in set builder form. From the given figure, it seems that P equals to 5, 6, 7 and Q is 3, 4, 5. So, relation between P and Q in set builder form. आपको set builder form में कोई condition लगानी होती है. तो R को हम लिखेंगे ordered pair में x, y. अब वो condition क्या है वो आप देखिए. 5 जो है वो 3 पे जा रहा है, 6 जो है वो 4 के साथ रिलेट कर रहा है, 7 जो है 5 के साथ रिलेट कर रहा है. कॉमन कंडीशन ये दिख रही है कि इन सब में 2, 2 का डिफरेंस है. तो हम लिखेंगे ऐसे r इक्वल्स टू x, y, वेयर y इक्वल्स टू x - 2. आपको यहाँ जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं कोडोमेन में 3, 4 और 5, वो p में आपको 2 माइनस करने से मिल रहे हैं. तो हम क्या बोलेंगे? y इक्वल्स टू y, दैट मीन्स कोडोमेन का एलिमेंट y जो है वो हमें डोमेन के एलिमेंट में से 2 माइनस करने से मिल रहा है. तो y इक्वल्स टू x - 2 where x belongs to p. Or you can write r equals to xy where y equals to x - 2 for x equals to 5, 6, 7. ये हुआ set builder form. Now question है write its roster form also. roster form सबसे easy होता है. आपको ये देखना है डोमेन का कौन सा एलिमेंट कोडोमेन के कौन से एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है. सिंपल है. 5, 3, 6, 4, 7, 5. Last one is what is its domain and range. डोमेन दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो डोमेन में आता है और जो दूसरा वाला है वो रेंज में आता है. हम देख लेते हैं. डोमेन ऑफ R इज 5, 6, 7 एंड रेंज ऑफ R इज 3, 4, 5. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट A इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 6. Let R be the relation on A defined by AB where A and B both belongs to set A and B is exactly divisible by A. याद रखना जो सेकंड एलिमेंट है B कोडोमेन का वो A से exactly divisible होना चाहिए. Exactly divisible that means remainder 0. Write R in roster form. So let A given as 1, 2, 3, 4, 6 and relation R is given as AB where AB belongs to A and B is exactly divisible by A. Elements of R would be, हमें एलिमेंट A में से ही सिलेक्ट करने हैं और B भी जो है वो भी A में ही मिलना चाहिए. क्या बोला है? A and B both belongs to A. आपको ये देखना है सेकेंड एलिमेंट जो है जो B वो है A से डिविजिबल होना चाहिए. आई एम टेकिंग 1, 1. Why? Because second one
is divisible by the first one. Then I am taking 1, 2. Students, हर नंबर 1 से तो डिवाइड होता ही है, तो 1 को हर एक नंबर के साथ रिलेट कर दो सेट ए के, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6, ये तो ठीक है. अब हम बात करेंगे ए के नेक्स्ट एलिमेंट विच इज 2. 2 को रिलेट करो ऐसे नंबर से जिससे डिवाइड करने से हमको 0 मिलता हो रिमाइंडर में. आई एम डिवाइडिंग 2 by 2. देन 2, 4, 2, 6 कंप्लीटली डिविजिबल होता है. अब हम 3 पे आते हैं. 3, 3, 6 देन कम टू 4, 4, 4 को 6 के साथ नहीं कर सकते, वो डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली. देन 6, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म हमने लिखा. फाइंड द डोमेन ऑफ आर. डोमेन दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, तो हमें मिल रहा है 1, 2, 3, 4, 6. रेंज पूछा गया है. रेंज दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, तो रेंज मिल रहा है 1, 2, 3, 4, 6. दिस टाइम डोमेन और रेंज दोनों ही हमको सेम मिल रहे हैं. नेक्स्ट, determine the domain and range of the relation R defined by R equals to x, x plus 5, where x belongs to set 0, 1, 2, 3, 4, 5. Students, यहाँ x की वैल्यूज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, हमें 0 से 5 तक की वैल्यूज लेनी है. बहुत सिंपल है, देख लेते हैं रिलेशन R को कैसे डिफाइन किया है वो. अब हम वैल्यूज लेते हैं. सबसे पहले x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो हमको y क्या मिलेगा, आई मीन रेंज का एलिमेंट क्या मिलेगा, 0 plus 5 दैट इज 5. So I am writing 0, 5. अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो y मिलेगा 1 plus 5 which is 6. Similarly, we are getting 2, 7, 3, 8, 4, 9. If I am taking x as 5, I will get 5 plus 5 which is 10. So domain of R is all the first element of ordered pair. So 0, 1, 2, 3, 4, 5 and range of R is 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Write the relation R as x, x cube where x is a prime number less than 10 in roster form. इधर आपकी वैल्यू लिमिट की गई है कि x जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए, उनका रोस्टर फॉर्म लिखना है. The prime numbers less than 10 are, mind well, smallest prime number is 2, तो 2 से स्टार्ट करेंगे. 2, 3, 5 and 7. Therefore रिलेशन देखते हैं. अगर हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 को लेंगे x की जगह पे, 2, cube of 2 which is 8. Next is 3, cube of 3 which is 27. Similarly we will get 5, 125, 7, 343. So this is the roster form. Now next question number 8. Let a equals to x, y, z and b equals to 1, 2. Find the number of relations from a to b. Number of relations they are asking. Given a as x, y, z and b as 1 to a cross b करते हैं. आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट सिखाया हुआ है. x, 1, x, 2, y, 1, y, 2, z, 1, z, 2. As number of elements present in a cross b is equals to 6. Therefore, the number of subsets of a cross b will be 2 to the power 6. We have studied this concept in chapter number 1 set. Therefore, the number of relationships from a to b is 2 to the power 6. Now, last question of this exercise. Let R be the relation on Z defined by R equals to a, b, where a, b belongs to z, that is the set of integer, and a minus b is an integer. Find the domain and range of R. We will write the relation which is given as a, b, b belongs to z, a minus b is an integer. We know that the difference between any two integers, whether positive or negative, both negative, negative positive or positive negative, is always an integer. Therefore, the domain of R equals to the whole set Z, that is the set of integer only, and range of this R is again Z. Thank you students. Happy learning. Keep practicing the questions of textbook.